Hello and welcome you all. Let's continue our discussion. In the first part of OPSC PGD physics solution, we have completed up to question number 20. So in this video, we will start from question number 21. Question number 21. Identify the equation del square phi equals to minus 4 pi rho, where phi is the scalar potential. So we have to identify this equation. देखो यहाँ phi is the scalar potential and rho is the charge density. So this equation belongs to electrostatics. Okay. So देखो ऑप्शन में भी चेक करो, वो पूछ रहा है कि लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन्स इक्वेशन. सो आइदर इट इज लाप्लास और पॉइसन्स. सो देखो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, जैसे कि राइट डाउन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, that is dif E equal to rho by epsilon naught. E is the electric field, rho is the volume charge density, and we know electric field can be expressed as minus grad phi. Phi is the scalar potential. So if you use this if in this equation in Gauss law, you will find dif minus grad phi equal to rho by epsilon और डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट. सो देखो ये तो गॉस लॉ है, गॉस लॉ, एंड दिस इज पॉइसन्स इक्वेशन, पॉइसन्स इक्वेशन. एंड फॉर ए स्पेशल केस इफ चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू जीरो, then del square phi equal to 0, and this is known as Laplace equation. This is Laplace equation. तो देखो इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसके साथ. तो क्या है कि जो ये इक्वेशन गिवन है, दिस इज इन सीजीएस यूनिट. ये जो इक्वेशन गिवन है ये सीजीएस यूनिट में गिवन है. देखो, और ये जो तीनों हम एक्सप्रेस किए हैं, गॉस लॉ, पॉइसन्स इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, दीज आर इन एसआई यूनिट. ओके. सो इसलिए ये मैच नहीं हो रहा है. तो तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो कैसे हम एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, तो तुम वो जरूर चेक कर लेना. ठीक है. तो देखो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे कि एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए वी रिप्लेस एप्सिलॉन बाई 1/4 पाई. तो ये देखो जो एसआई यूनिट में पॉइसन्स इक्वेशन है, इसमें एप्सिलॉन की जगह 1/4 पाई पुट कर लो. देखो ये क्या हो रहा है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो 1/4 पाई, और दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई रो. सो द गिवन इक्वेशन इज योर पॉइसन्स इक्वेशन in CGS unit. So your correct option is option C. Question number 22. The interaction energy U of two dipoles of moment P1 and P2 separated by mod of x1 minus x each. So we have to find a expression for interaction energy of two dipoles having dipole moment P1 and P2. देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, जैसे कि रिमेंबर दैट इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू डाइपोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r is given by u equals to k over r cube P1 dot P2 minus 3 P1 vector dot n cap P2 vector dot n cap. Okay, r is the separation distance between P1 and P2, and n cap is the unit vector from P1 to P2. तो देखो ये हम फिगर से डिफाइन कर रहे हैं. So consider two dipoles with dipole moment P1 and P2, and their position vector is x1 and x2 respectively. Now the position vector of position vector of P1 with P2 is r vector and define in this direction. So from triangle law of vector addition, r vector equals to x1 minus x2 vector. So interaction energy for these two dipoles will be u equals to k. देखो ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड क्यू है ना, तो you can directly write r cube P1 dot
P2 minus 3 P1 डॉट एन कैफ P2 डॉट एन कैफ। देखो ये जो एन कैफ है ना, ये क्या है? एन कैफ इज योर आर कैफ, और यू कैन डिफाइन लाइक दिस आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड, and this can be k by x1 minus x2 cube p1 dot p2 minus 3 p1 vector dot n cap p2 vector dot n cap। and देखो, so your correct option is option C। ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी में के नहीं है, एक्चुअली के इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन। अगर अगेन तुम सीजीएस यूनिट में एक्सप्रेस करोगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4, सो ये के 1 हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिफाइंस ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। देखो एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लो, जैसे कि इन फर्स्ट ऑप्शन B equals to curl A, where this A vector represents magnetic vector potential, magnetic vector potential। So your correct option is option A। देखो और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर, जैसे कि फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी यू कैन डिफाइन ए इक्वल्स टू हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर। So for uniform magnetic field, A equals to half B cross R vector. Similarly, you can define magnetic vector potential A with current density, volume current density. And in terms of current density, it is given by A equals to mu naught by 4 pi J d tau by R. Okay, so remember that formula. Question number 24. Faraday's law of electromagnetic induction is given by। देखो we know Faraday's law states that whenever magnetic flux through closed conducting loop changes, an EMF is induced in it, and mathematically it is expressed as EMF equals to minus del phi E by del T। Now according to our question, capital F represent magnetic flux and capital E represent electromotive force. So equation will be E equals to minus del F by del T, or E equal to minus K del F by del T। So your correct option is option D। Question number 25. In the presence of a magnetic field, the change in momentum of an electron is। देखो we have to find the change in momentum of a charged particle, here it is electron in the presence of a magnetic field, and this question is from quantum mechanics 3-dimensional problem। Okay, so you can check the related concept there, and remember that in presence of magnetic field the momentum changes, and that is given by P, momentum becomes P minus Q by C vector potential A। So Q is the charge of the charged particle, so here as it is electron you can consider to be minus C, so then it will be going to P plus E by C A। So but check your option, maybe in this option they have taken Q as E, so your answer will be P minus E by C A, change in momentum of the electron। So your correct option is option B। But remember this general formula कि in presence of magnetic field the momentum of a charged particle becomes P minus Q by C A। A is the magnetic vector potential. If B is your uniform magnetic field, you can define A as half B cross R। R is the position vector।
Question number 26. Which of the following interaction results from relativistic effect? देखो चार ऑप्शन एक बार चेक कर लो, जैसे कि कूलम इंटरैक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोलर इंटरैक्शन. एंड वी नो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन results from relativistic effect. So your correct option is option C. Question number 27. The Poynting vector is given by, we know Poynting vector is given by E cross H, or it is equal to E cross B by mu naught. So your correct option is option A. देखो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एस, तो वो भी याद रख लेना. जैसे कि पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया per unit time, and we know energy by time is the power, so it is power by area, or it is intensity. So its unit is power by area, that is watt per meter square. And remember that Poynting vector for an electromagnetic wave points in the same direction as propagation vector. Question number 28. For moderate electric fields, the relation between the current density and the electric field is, देखो from Ohm's law we know that J equal to sigma E. So relation between the current density J and the electric field is linear. So your correct option is option C. Question number 29. Which of the following conditions is an uncertainty principle? We know uncertainty principle between position and momentum, and that is given by del x del Vx greater than equal to h cot. So your correct option is option B. And there is also more uncertainty relation like between energy and time. So remember that del E del T greater than h cot. Similarly between angular momentum and angular displacement, del L del theta greater than equal to h cot. So these are the uncertainty principle relations. Question number 30. Which of the following relations is correct for a greater than 0? देखो चार ऑप्शन चेक कर लो. ये पूछ रहा है कि डेल एक्स इक्वल्स टू, तो देखो बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, एंड फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वी नो दैट फॉर ए ग्रेटर देन 0 डेल ए एक्स इक्वल्स टू 1 by mod a del x. So your correct option is option B. देखो ऐसे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, तो वो सब रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले. जैसे कि वी नो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज ए इवन फंक्शन, सो डेल ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स, डेल ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू डेल ए माइनस एक्स. ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ओके, कोई भी तुम बुक स्टैंडर्ड बुक चेक कर लेना. क्वेश्चन नंबर 31. इन द हाइजेनबर्ग पिक्चर the equation of motion for a time dependent operator is, so we have to write equation of motion for a time dependent operator in Heisenberg picture. And remember that in Heisenberg picture for a time dependent operator the equation of motion is given by d by dt equals to del by del t plus 1 by I h cot commutator bracket of h, where h is the Hamiltonian of your system, and it is given that this operator is time dependent. देखो if this does not depend explicitly on time, then this term will be 0, and this total derivative will equals to 1 by iota h cot commutator bracket of this operator and Hamiltonian. So your correct option is option A. Question number 32. The value of commutator bracket of x to the power n px is, तो देखो ये this is the general formula for commutator bracket, and this is equal to n x to the power n minus 1 x px
now which is equal to n x to the power n minus 1 iota h cot. So your correct option is option C. Question number 33. The total energy E of an electron in equilibrium in an orbit depends on the principal quantum number n according to. From Bohr's atomic model, we know that energy of an electron in nth orbit is given by En equal to minus 13.6 electron volt over n square. So En directly proportional to minus 1 by n square. So your correct option is option D. Question number 34. Which of the following sets represents the Pauli spin matrices correctly? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तुम देखना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो ना तो ये पाउली मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो करेक्टली ये याद रखना. जैसे कि सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0 1 1 0, sigma y equals to 0 iota minus iota 0, and sigma z equals to 1 0 0 minus 1. So these are the Pauli matrices. So your correct option is option B. Some more important information about these Pauli matrices. Remember that they are Hermitian, they are traceless. Traceless means the sum of their eigen values is 0 or sum of their principal diagonal elements is 0, and their determinant is equals to minus 1. Okay, so very important properties about the Pauli's matrices. Question number 35. The matrix that produces a space inversion is. सो देखो चार ऑप्शन चेक कर लो कि व्हिच मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस स्पेस इन्वर्सन. देखो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नेगेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट विल प्रोड्यूस स्पेस इन्वर्सन, दैट इज आई इक्वल्स टू -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 3 × 3 मैट्रिक्स. Okay, so your correct option is option A. Question number 36. The second order term energy for the nth state of the perturbing Hamiltonian H dash is given by. देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया फ्रॉम perturbation theory. So you have to remember this. In the second order energy term is given by summation n not equals to m h dash n mod square over En minus Em. So your correct option is option C. Question number 37. Zeeman effect is the change in the energy levels of an atom caused by. So Zeeman effect is caused by uniform magnetic field. So your correct option is option C. Question number 38. For a spin half particle, the time reversal operator is. We know for spin half particle, the time reversal operator is minus iota sigma y k. Sigma y is the Pauli matrix and k is the complex conjugate operator. So your correct option is option B. Question number 39. The components of the orbital angular momentum operator are. So we have to find the components of angular momentum, and the option check करो वो generally we have to express this in Cartesian coordinate system. So and we know angular momentum is expressed as cross product of r and p, that is L equal to r cross p. So you have to find the cross product of r and p. R is given by in Cartesian coordinate system xi kf plus yj kf plus zk kf, and p equal to pxi kf plus pyj kf plus pz
kk. So now L equals to I cap, j cap, k cap, x, y, z, px, py, pz, and you can calculate this determinant like I equals to y pz minus z py plus j cap z px minus x pz plus k cap x py minus y px. So your x component of angular momentum is this y pz minus z py, sorry, y component of angular momentum is this. देखो ये सही से कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्टली प्लस लिया हूँ, ठीक. सो इट इज जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, अच्छा यहाँ पर कैप नहीं आएगा, एंड एल जेड इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. तो अभी ऑप्शन चेक कर लो, देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. सो आंसर विल बी, और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव. Question number 40. In terms raising A dagger and lowering A operators, the Hamiltonian of harmonic oscillator satisfies the following equation. So we have to express Hamiltonian of harmonic oscillator in lowering operator and raising operator. And remember that A cap A dagger equals to Hamiltonian by h cut omega plus half. So your correct option is option D. A dagger equals to Hamiltonian by h cut omega plus half. So देखो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, A dagger A cap equals to Hamiltonian by h cut omega minus half, and A cap is given by square root under m omega by 2 h cross x cap plus I over square root under 2 h cot m omega p x cap, and A dagger is given by square root under m omega 2 h cross x cap minus iota over square root under 2 h cot m omega p x cap. A cap is known as lowering operator and this is raising operator, and they have some more important properties, like when lowering operator acts on state n, it gives rise to square root under n minus 1, and when A dagger operates on state n, it gives square root under n plus 1 state n plus 1. So remember this expression. तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप दिस विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम, एंड इफ सो like and share this video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you. See you in the next video.